Hello, this is Kamini from Speak Like Kamini and welcome to today's video on Vocabulary Challenge Day 20. Today I'm going to give you 6 synonyms to simpler sounding words with the alphabet U. ये words ना केवल आपकी vocabulary को polish करेंगे but they will also enhance your communication skills. If you haven't seen the other videos from the same series, you can always check them out in our playlist. Alright then, let's start. The first word on the list is ultimatum, which means final warning. जिसे हम अंतिम चेतावनी भी बोलते हैं, उसे आप इंग्लिश में ultimatum बोल सकते हैं. Let's take an example. The teacher gave an ultimatum to the child's parents. मतलब टीचर ने बच्चे के माँ बाप को आखिरी चेतावनी दी, एक फाइनल वार्निंग दी. तो हम यहाँ फाइनल वार्निंग के लिए वर्ड लगा रहे हैं ultimatum. The next word on the list is unabashed, which means unashamed. मतलब बिना किसी शर्मिंदगी के. Let's take an example. He bullied her unabashed. Means उन्होंने बिना किसी शर्म के उसको परेशान किया. तो इस प्रकार से हम unashamed के लिए unabashed यूज़ कर सकते हैं. The next word on the list is unambiguous, which means precise या बिल्कुल clear. जब हमें किसी चीज़ पे पूरी तरह की क्लैरिटी होती है तो वहाँ पर हम precise या clarity वर्ड यूज़ करते हैं. उसकी जगह आप बोल सकते हैं unambiguous. For example, their position was clear and unambiguous. The next word on the list is unanimous, which means united. एकजुट होना उसको हम unanimous बोलते हैं. For example, the jury reached a unanimous verdict. मतलब जो ज्यूरी की वर्डिक्ट थी, जो उनका मत था या जो उनका डिसीजन था, वो एकजुट होकर था, किसी का भी मत अलग अलग नहीं था. तो जब हम एकजुट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं unanimous से. So the word that you are supposed to use is unanimous. Alright, the next word on the list is unbiased, which means impartial, बिना किसी भेदभाव के. Let's take an example. For his good deeds, he deserves an unbiased investigation. That means जो अच्छे कार्य उन्होंने अपनी ज़िंदगी में किए हैं, उसके लिए वो एक impartial investigation deserve करते हैं. So, unbiased can be used in place of impartial. The next word on the list is unbridled, which means uncontrolled. जो कंट्रोल नहीं किया जा सकता या uncontrolled हो, उसको हम बोलते हैं unbridled से. Let's take an example. She jumped with unbridled joy at his result. किसी के रिजल्ट आने पर उन्हें इतनी खुशी हुई कि वो खुशी में uncontrolled खुशी में एकदम से उछल पड़ी. So, uncontrolled की जगह हमने यहाँ पे यूज़ किया unbridled. With that, we have come to the end of this video. I hope you enjoyed listening and learning these new words and will try practicing them in your communication next time. If you want to learn more things about English, you can always follow us on Facebook, Twitter and Instagram, the links to which have been shared in the description box. Alright then, till next time, it's bye-bye from Speak Like Kamini.